Hello students, this is MCQ series. Here we will do 30 objective questions from chapter 12 Biotechnology and its applications. Question 1. Night blindness can be prevented by use of नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है. जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ राइस विच इज गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए. सो consumption of golden rice can prevent night blindness. So correct answer is A. Night blindness can be prevented by use of golden rice. So mark A. Question number 2. The gene cry1AB and cry2AB produce toxins against dash and dash respectively. cry1AB gene produce करता है toxin against corn borer and cry2AB gene produce करता है toxin against cotton bollworm. So correct choice is C. The gene cry1AB and cry2AB produce toxins against corn borer and cotton bollworm respectively. So mark C. Question 3. The trigger for activation of toxin of Bacillus thuringiensis is जो टॉक्सिन Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब ये टॉक्सिन इंसेक्ट में एंटर करते हैं देन दे बिकम एक्टिव ड्यू टू एल्कलाइन pH ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज सी. मार्क सी. द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ Bacillus thuringiensis is alkaline pH of gut. Question number 4. Which of the following BT crop is being grown in India by the farmers? Out of cotton, brinjal, soybean and maize, the BT crop grown in India is cotton. So correct answer is A. Mark A. Question 5. Main objective of production of genetically modified or GM crops is to A. To make crop more tolerant to abiotic stress. Genetically modified crop ज़्यादा tolerant होती हैं to factors like cold, drought, heat, etc. So this statement is correct. Now come to B. To reduce dependence on chemical pesticides. Yes, this is also right. ये crops pest resistant होती हैं, हमें chemical pesticides use करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. They are not dependent on chemical pesticides. Now next is C. To reduce post harvest loss. This is also correct. Post harvest loss भी कम होता है in GM crops. So all the three statements are correct. So correct answer is D. Mark D. All of above. Come to question number 6. RNA interference technique में नीचे दिए गए 4 steps A, B, C, D में से कौन सा step नहीं होता? This technique is employed in making tobacco plants resistant to nematode Meladogyn incognitia. RNA interference technique जो टोबैको प्लांट को निमेटोड रेजिस्टेंट बनाने के लिए यूज में लाई जाती है, इसमें ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए नहीं हो पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. सो करेक्ट आंसर इज बी. मार्क बी. Translation of messenger RNA is not allowed to take place in case of RNA interference. Question 7. Tobacco plants resistant to a nematode have been developed by introduction of DNA that produced. टोबैको प्लांट्स को निमेटोड रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो DNA इंट्रोड्यूस किया जाता है वो DNA सेंस एंड एंटीसेंस दोनों RNA बनाता है. सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट कर देता है एंड दैट साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ निमेटोड. सो करेक्ट चॉइस यहाँ पर ए है. मार्क ए. डीएनए प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन होस्ट सेल्स. क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय microbial cloning and genetic engineering. It is human insulin.
So correct answer A है, mark A. Next question, question number 9. Human insulin is being commercially produced from a transgenic species of कौन से ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज यूज की जाती है फॉर मेकिंग इंसुलिन कमर्शियली? दिस ऑर्गेनिज्म इज एस्चुरेशिया. एस्चुरेशिया कोलाई बैक्टीरिया यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन. सो करेक्ट आंसर इज सी, मार्क सी. क्वेश्चन नंबर 10. विच कंपनी प्रिपेयर्ड इंसुलिन इन 1983? Eli Lilly company prepared insulin in 1983. So correct choice is A, mark A. Question 11. C-peptide of human insulin is, human insulin has 3 peptide chains A, B and C. When all 3 peptide chains are present, then insulin is called as pro-insulin. ये non-functional होता है. प्रो इंसुलिन को फंक्शनल इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए सी पेप्टाइड चेन को रिमूव करना पड़ता है. सो करेक्ट आंसर इज सी, मार्क सी. सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 12. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फर्स्ट जीन थेरेपी SCID सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए की गई थी. सो करेक्ट आंसर इज डी, SCID, मार्क डी. क्वेश्चन नंबर 13. ADA is an enzyme which is deficient in disorder SCID. What is the full form of ADA? ADA एंजाइम का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम. सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है. सो करेक्ट आंसर मार्क कीजिए यहाँ पर. करेक्ट आंसर इज बी, मार्क बी. क्वेश्चन 14. हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज? पहले थेरेप्यूटिक देखिए क्या है. यह ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज से जुड़ी है. नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक? इट मीन्स प्रोटीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और इनका यूज ट्रीटमेंट में किया जाता है. अभी तक 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैं जो अप्रूव्ड हैं वर्ल्ड वाइड फॉर ह्यूमन यूज. सो करेक्ट आंसर इज सी, मार्क सी. क्वेश्चन नंबर 15. How many recombinant therapeutics are being marketed in India? Answer is 12. 12 recombinant therapeutics are being marketed in India. So correct answer is B, mark B. Question number 16. Early detection of diseases is possible by A. Polymerase chain reaction and C. Recombinant DNA technologies. These two techniques are used for early detection of diseases. So correct choice is D, mark D, both A and C. Question number 17. It is single stranded DNA or RNA जिसको टैग किया गया है with radioactive molecule और इसका यूज किया जाता है to detect mutated gene. What is this? This single stranded DNA or RNA with radioactive molecule is called as PRO. So correct answer is B, mark B. Question 18. Alpha 1 antitrypsin is, यह एक ह्यूमन प्रोटीन है जो ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाया जाता है एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा डिजीज. एम्फीसीमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो करेक्ट आंसर इज D, mark D. Alpha 1 antitrypsin is used to treat emphysema. Question number 19. Animals that have had their DNA manipulated to possess and express a foreign gene are called? Animals जिसमें DNA को मैनिपुलेट किया गया है, DNA में चेंज लाया गया है by adding the gene of interest, and these animals can express the introduced foreign gene. And these animals are called as transgenic animals. So correct choice is A, mark A. Question number 20. Given the names of transgenic animals, identify the name of transgenic cow.
A. Rose, it is a transgenic cow. B. Dogge is a transgenic dog. C. Tracy, it is a transgenic sheep. And D. Andy, it is a transgenic monkey. So correct answer is A. Mark A. Rosie is a transgenic cow. Question number 21. In gene therapy for SCID, a functional ADA cDNA is introduced into lymphocytes by using vector dash. Severely combined immunodeficiency disease treatment के लिए जब जीन थेरेपी किया जाता है, देन फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और cDNA को लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए रिट्रोवायरस वेक्टर का यूज़ किया जाता है. सो आंसर इज अ फंक्शनल एडीए cDNA is introduced into lymphocytes by using vector called retrovirus. Question 22. A test based on antigen-antibody interaction and used to detect disease is, this test is ELISA and its full form is enzyme-linked immunosorbent assay, which is based on antigen-antibody interaction and is used to detect diseases. So correct answer is A, mark A, it is ELISA test. Question number 23. The site of production of ADA in the body, adenosine deaminase enzyme, lymphocytes में बनता है. So correct choice is B, mark B. The site for production of ADA in the body is lymphocytes. Question number 24. The Bt toxin does not kill the bacteria producing it because it is produced in an dash state. Bt toxin जो बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis बनाता है, बट बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis को किल नहीं करता because it is present in an inactive state और इसकी inactive state को प्रोटॉक्सिन भी कहा जाता है. सो आंसर इज inactive state. Question number 25. Using dash vectors, nematode specific genes are introduced into the host plant. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया जाता है निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए. कम टू क्वेश्चन नंबर 26. GEAC stands for, GEAC is Genetic Engineering Approval Committee, which make decisions regarding validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services. Question 27. Biopiracy means बिना प्रॉपर परमिशन के किसी भी कंट्री के बायो रिसोर्सेज को यूज करना बायोपायरेसी कहलाता है. सो आंसर इज सी, मार्क सी. बायोपायरेसी मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन. क्वेश्चन नंबर 28. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया टू कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट टर्म्स and other emergency provision in this regard? Indian Parliament has cleared Indian Patent Bill to stop the unauthorized exploitation of bioresources. So correct answer is B, mark B. Question number 29. Which variety of rice was patented by US company, even though the highest number of varieties of this rice are present in India? Basmati variety of rice was patented by US company, जबकि बासमती की सबसे ज़्यादा varieties इंडिया में पाई जाती हैं. So correct choice is C, mark C, it is basmati rice, basmati variety. Question number 30. The milk obtained from transgenic cow Rose has dash human protein and the amount of this protein in milk is 2.5 gram per liter. The milk of Rose cow has human alpha lactalbumin, which makes the milk more balanced for human babies. So that's all for today.
Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.